डिफरेंट टाइप रे ये अछि कि एया थिला एया करियार अछि तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन इज अ लिटिल बिट मीन रिमेंबर करिया को पड़ियो बहुत के जिंस यू हैव टू रिमेंबर सो मच थिंग सो आई हैव सो मेनी extra slides added means ମୁଁ बहुत extra slides add करছি I will pause and you can just look at them I will not discuss all of the patterns like एटा थिले एटा केमती करिबा एटा थिले एटा केमती करिबा I will discuss the main concepts and I will do some questions first integration con integration is simply known as the antiderivative what is antiderivative suppose गोटे function रो मैं integration जदी करिबी integral of f of x dx is equal to fx ताले मु एठी कहबी जे fx is the integrand x is the variable and fx is known as the integral or the antiderivative or the primitive सिंपल चीज प्रिमिटिव तो जदि मु fx को डिफरेंशिएट करिवि ऑब्वियसली मते कोन मिलबो fx को डिफरेंशिएट करले कैपिटल fx को डिफरेंशिएट करले मते मिलबो fx कांस्टेंट काहे कि ना कांस्टेंट गोटे ऐड हमें करताओ काहे ना कांस्टेंट रो डिफरेंशिएशन का 0 आसे दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन करला परे इंडेफिनाइट हमें कांस्टेंट ऐड करताओ जदि एठी मु डेफिनाइट कर देबी डेफिनाइट इंटीग्रेशन कर डेफिनाइट इंटीग्रेशन इज means a to 8 ভিতরে কেতে এনক্লোজড তো ডেফিনাইট ইন্টিগ্রেশন রে কনস্ট্যান্ট আসিবো না তো কিছিটা স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্ট এতিকি স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্ট আছে আম পাখরে কি ডেরিভেটিভ এয়া তো ইন্টিগ্রেশন কোন হবো sin x ର ଡେରିଭେଟିଭ cos x cos s ର ଡେରିଭେଟିଭ sin x minus cos x ର sin x sin x ର minus cos x ତ ଏମିତି କିଛିଟା ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡା କିଛି ଡିସ୍କସ ନାହିଁ ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ you can just look at them sin inverse x cos inverse x ର 1 by under root of 1 minus x square ର ଯେମିତି କଣ ହବ sin inverse x ହବ 1 by 1 plus x square ର କଣ ହବ tan inverse x ହବ ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି this and these are the results ଏତିକି ରେଜଲ୍ଟ ବେସିକ ରେଜଲ୍ଟ ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ ହେଇଯିବ next we will remember how to use these results in different type of question हमको different type ର solving method ଅଛି ଏତିକି ତ ଆମ standard integrals तो अब डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व हम देखिबा गोटे गोटे मेथड मु डिस्कस करिबी यू जस्ट अंडरस्टैंड द मेथड एंड मु किछटा छोटो एग्जांपल डिस्कस करिबी एवं लास्ट को क्वेश्चन उडा डिस्कस करिबी फर्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कोन आमे जानि जे हमको पचारा जीवो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx तो fx dx कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म मींस मु जो वेरिएबल एठी कोन अछि वेरिएबल पर x अछि मु ताको सम म वेरिएबल टाको t रे चेंज करिवि मु कोन करिवि ना सिंपल x इक्वल टू मु gt पुट करिवि सम फंक्शन ऑफ t तो मु कोन लिखिवि f ऑफ gt और dx कोन ऑफ कोर्स dx कोन हो dx इज g dash t dt gx is g dash t dt मु आको एबे इंटीग्रेट करिवि मु एमिति काहे करिवि एमिति करिले एमिति जदि मु करिवि तो बहुत इजी हेताय किछटा केस रे जदि मु समथिंग सब्स्टिट्यूशन करिवि मो इंटीग्रेशन टा इजी हे जाय जेमति कि फॉर एग्जांपल if I have if you have given some integration like x sin x square dx यदि r integration पचाला I will just replace x square by t then I will get 2x dx is equal to dt तो मु आको लिखि परिबी 1 by 2 sin x square dx sin x square is sin t and x dx मोटे 2 multiply is the 2x dx को लिख परिबी dt sin t dt इंटीग्रेशन रे बहुत इजी sin t dt रो इंटीग्रेशन हला minus cos t तो मोर आंसर आ जियो minus cos t by 2 plus c बहुत इजी तो एटा बहुत सिंपल एग्जांपल आमे देखिबा आउरी केमती बहुत सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट टाइप रे कर परिबा नेक्स्ट थिंग इज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कोन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होची जेति की बे आइडेंटिटी हमें पढिथिले से क्लास रे
10 12 15 टा भी जति आइडेंटिटी पढ़थिले ट्रिगोनोमेट्री ताको यूज करया अछि केमिति इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x दिस एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x एठी cos स्क्वायर x रो इंटीग्रेशन करबा बहुत कष्ट आमर थिंग होची फर्स्ट थिंग इज इंटीग्रेशन इज convert the given integral convert the given integral हमर जो इंटीग्रेशन अछि convert the given integral to a non integral non माने कोन जति कि 10 12 टा फार्मूला हमें पछरे देखिथिले ए जो 10 12 15 टा फार्मूला ए नॉन फॉर्म में जदि हमें कन्वर्ट कर देबा गोटे इंटीग्रल को देन वी कैन जस्ट डू द थिंग्स वी वांट हमें जस्ट सेमती कर परियो तो cos स्क्वायर x रो हमें जानने बट हमें जाने जे कि cos स्क्वायर x को मैं लिखि परिबी 1 plus cos 2x by 2 cos स्क्वायर x is 1 plus cos 2x by 2 तो 1 plus cos 2x by 2 रो इंटीग्रेशन कोन हबो dx फर्स्ट ऑब्वियसली इंटीग्रेशन रे एडिशन होल्ड करिवो इंटीग्रेशन रे सब्सट्रैक्शन होल्ड करिवो लाइक दैट तो 1 by 2 dx सिंपल अलग अलग कर देबे cos 2x रा में जे समझते cos 2x रो कोन हबो 1 by 2 sin 2x तो 1 by 2 मल्टीप्लाई करले 1 by 4 sin 2x dx रे इंटीग्रेशन होची x तो हमको हम cos स्क्वायर x ता थिला अननोन इंटीग्रल हमें ताको कन्वर्ट करले ओटे नॉन इंटीग्रल कन्वर्ट करिया पय हमें कोन यूज कर परिबा कन्वर्ट करिया पय गोटे मेथड हमें सिखले सब्स्टिट्यूट कर परिबा नेक्स्ट मेथड हम देखले जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर परिबा एबे हमें देखिबा आउरी अलग अलग मेथड दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रल दीस आर कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म एगुडा मन रखिया पय पडियो हाउ टू सॉल्व जदि इंटीग्रेशन रे ऑफ द फॉर्म अछि ऊपर खाली 1 तय अछि ए गोटे क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एटा अछि और अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अछि और किछि भी पावर अछि लाइक पावर किछि भी ओडर होयला लाइक ऑब्वियसली अंडर रूट रे ही काम करियो और अलगा पावर हले हमको ऊपर दा अलगा डिफरेंशिएट दरकार जस्ट सी कि जदि ए फॉर्म रे अछि और अंडर रूट ऑफ ए फॉर्म रे अछि तो आमे ताको कोन कर परबे आमे जानचे हम पाखर किछिटा स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स अछि लाइक अंडर रूट ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एटा स्टैंडर्ड एटा tan इनवर्स x बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एबे सब स्टैंडर्ड इंटीग्रल हम कर परिया तो आको कोन करिया आको ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो आको हमें केम लिख परिया सिंपल ए कॉमन नहीं नेले ए जदि हम कॉमन नहीं नेमी बाहर को नहीं नेमी तो मु आको लिखि परिबी x प्लस b बाय 2 रो होल स्क्वायर x प्लस b बाय 2 रो होल स्क्वायर में लिखि परिबी ना इजीली प्लस और माइनस जहां भी आसीबो प्लस गोटे c थिबो तो एठी प्रथमे आसीबो माइनस b स्क्वायर बाय 4a सॉरी माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर आसीबो काहेकि माइनस बी स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर आसीबो ना हम डिनोमिनेटर रे माइनस बी स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर नथला बट हम स्क्वायर रे अछि तो गोटे आसीबो माइनस बी स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर आ गोटे आसीबो जेटा डिनोमिनेटर रे हमें अछि प्लस सी तो जेबे मु तापरे मु कोन करबी ना मु आकु नै नेमी टी x प्लस b बाय 2 को मु नै नेमी टी सब्स्टिट्यूट कर देबी टी रे आकु जदी मु टी नै जिबी आकु टी नेले मोर आर डिफरेंशिएट कोन हो dt तो dx इज इक्वल टू dt तो ऊपर किसी चेंज होबा नहीं तो ये जे हम फॉर्म रे थिला सेटा हमें नॉन फॉर्म रे पाई जिबा कि सम t स्क्वायर प्लस सम आकु गुटे स्क्वायर कर देबी t स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और t स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अंडर रूट रे थिले t स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस k स्क्वायर तो सेमिति हेले हम नॉर्मल फॉर्म रे आजिबो देन हमें ताको हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में सॉल्व कर परिया सिमिलरली जदि ऊपर px plus q देछि जदि ऊपर गोटे फंक्शन देछि px plus q लिनियर फंक्शन आ तय अछि क्वाड्रेटिक केमति अछि आइदर रूट रे अछि नहले खाली अछि खाली थिले भी चलेबो रूट रे थिले भी चलेबो
आ ऊपर जदी लिनियर अछि सता कोन करियर अछि एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट मेथड आइदर क्वाड्रेटिक फंक्शन पई हो जदी हम e टू द पावर समथिंग रे देखिबा किबा ट्रिगोनोमेट्री रे भी आगु देखिबा साइन ऊपर जो जिनसटा को देछि ताको हमें दीटा पार्ट रे डिवाइड करिबा सम लैम्ब्डा इनटू फंक्शन f प्लस सम mu इनटू सम फंक्शन g तो f और g कोन हबो ऑफ कोर्स इन दिस केस g फंक्शन टा गोटे कांस्टेंट फंक्शन हबो 1 कांस्टेंट काहे की ना जदी ऊपर 1 थाय की तय अंडर रूट ऑफ स्क्वायर क्वाड्रेटिक अछि किबा खाली क्वाड्रेटिक तो हमें जानि जे केमति करियार अछि ताने f कोन हबो f हबो एई जो क्वाड्रेटिक फंक्शन टी अछि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तार डिफरेंशिएशन काहे कि नेबी कौन कहला जे जो f हबो सेटा हबो 2ax प्लस b आर डिफरेंशिएशन काहे कि जदी मो आर डिफरेंशिएशन ऊपर रखिबी जदी मो आर डिफरेंशिएशन ऊपर रखिबी माने सपोज गोटे फंक्शन रो डिफरेंशिएट ऊपर अछि सपोज मो पाखरे अछि f डैश x dx डिवाइडेड बाय सम फंक्शन ऑफ fx सम फंक्शन ऑफ fx अछि तो मु कोन कर परिबी मु करि परिबी कोन ना आई कैन जस्ट पुट fx इज इक्वल टू t fx इज इक्वल टू t हेले कोन हबो f डैश x dx इज इक्वल टू कोन हे जिवो dt तो मोर इंटीग्रेशन जस्ट आस जिवो dt डिवाइडेड बाय g ऑफ t t रो किछु गोटे फंक्शन थिबो इजीली t स्क्वायर हो t हो तो सेटा हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन रे इजीली सॉल्व हो जिवो सो दिस इज द मेथड हम पाक जदी ऊपर लिनियर अछि हमें ताको दीटा पार्ट रे डिवाइड करिया गोटे लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स गोटे पार्ट हबो तार डेरिवेटिव आ गोटे पार्ट कांस्टेंट आगु को हमें देखियो और डिफरेंट टाइप रे केमति then there is another method called integration by partial fraction partial fraction कोन गोटे रेशनल फंक्शन जदी हम पाखरे अछि आमे ताको कन्वर्ट कर पारिया पार्शियल फ्रैक्शन रे कोन प्रकार रेशनल फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन को जे ऊपर जो डिग्री तय डिग्री टू कम हिथिबो आउ इम्प्रॉपर कोन ऊपर डिग्री तय डिग्री टू बेसी हिथिबो तो पार्शियल फ्रैक्शन केमिति करिया सपोज आम पाखरे अछि ऊपर किछि गोटे अछि p ऊपर किछि भी गोटे अछि समथिंग लाइक ताथु कम डिग्री वा मींस आम पाखरे गोटे प्रॉपर रेशनल फंक्शन अछि px by qx गोटे प्रॉपर रेशनल फंक्शन अछि ठीक अछि तो आउ qx जो अछि हमर qx को हमें सम नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स ऊपर लिख परिया लाइक x minus 1 x minus 2 x minus n एमिति लिख परिया आउ आउ जिनसटा कोनोसी भी फैक्टर रिपीट हो नथिवो माने x minus x1 दिथो नथिवो x minus x1 रो स्क्वायर नथिवो कि x minus x2 रो स्क्वायर नथिवो सिंगल थिबो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स px by qx को हमें केमति लिख परिया ना हमें ताको एमिति लिखि परिया जे px by qx is equal to a1 divided by x1 y1 मींस तो हम पाखरे कोन अछि qx अछि तो q जदी मो आपको सिंपली एही वाला लगे px by q a1 divided by x minus x1 plus a2 divided by x minus x2 plus dot an divided by x minus x जदी मो एही वाला लिखिबी तो ऑब्वियसली आपको मैं जते सॉल्व करिवि आपको जते मैं सॉल्व करिवि तो कोन आस जीवो समस्तंगर एलसीएम कोन x1 x minus x1 into x minus x2 तो हेटा qx सागरे कटि जीवो तो मो पाखरे इक्वेशन कोन आसीबो px is equal to a1 into किछिटा रहइबो a2 into आउ किछटा रहइबो तो एटारे हमें कोन देख परिबा एटारे हमें एमिति देखि परिबा कि जस्ट हम पाखरे केतरा अननोन अछि n अननोन अछि n अननोन अछि आ हमें देखिबा जे px हबो गोटे n डिग्री थिबो मैक्सिमम n डिग्री or something like that हम पाखरे n unknown अछि we can just form n different equations n unknown n equations हे जिवो n unknown n equation easily solve हे जिवो for example जदि मो पाखरे अछि 1 by x minus 1 divided by x minus 1 into sorry 1 काहे भी कहबी 1 काहे कहबी मतलब कहबी x plus 1 divided by x minus 1
into x plus 2 तो आपको मैं केमती लिख पारिबी x plus 1 is equal to some p into x plus 2 into plus some q into x minus 1 तो मो पाखरे वेरिएबल केतरा p आउ q गोटे वेरिएबल p गोटे वेरिएबल q ए दिटा वेरिएबल रहला इक्वेशन कोन कोन रहला गोटे रहला p plus q is equal to 1 आ गोटे इक्वेशन कोन रहला 2p minus q is equal to 1 दीटा इक्वेशन दीटा नु इजीली सॉल्व हो जिवो पार्शियल फ्रैक्शन हमें ए वया सॉल्व दिस इज वन केस अनदर केस कोन जदी रिपीटेड थिबो x माइनस सपोज जहार भी रिपीटेड थिबो सेटा हमें कोन करबा ना जस्ट ताकू जति थर रिपीट हेची सेतरा अलग अलग कोएफिशिएंट लिखिबा लाइक सपोज x minus x1 and a1 by x minus x1 plus a2 by x minus x1 रो स्क्वायर up to केते जाय n divided by x minus x1 to the power n then we will do our normal partial fraction method आ गोटे केस कोन केस 3 कोन जदी एमिति क्वाड्रेटिक की सपोज आइदर क्वाड्रेटिक अछि और हायर डिग्री कोन कहली क्वाड्रेटिक अछि और हायर डिग्री भी थाई पारे यदि क्वाड्रेटिक और हायर डिग्री रे अछि आउ सेटा फैक्टर हमें कोन करी कांस्टेंट जगह रे हमें कोन नबा ना जस्ट 1 डिग्री लेस देन पॉलिनोमियल माने सिंपल कथा जदी मु कहबी आम पाखरे जदा फैक्टर गुडा तयतला फैक्टर गुडा कोन लीनियर पॉलिनोमियल x x1 तो आर डिग्री केते 1 ऊपर हमें लिखले 0 डिग्री पॉलिनोमियल 0 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट हमें लिखले एबीसी जदी हम पाखरे क्वाड्रेटिक अछि माने 2 डिग्री पॉलिनोमियल तो हमें वेरिएबल नबा गोटे 1 डिग्री पॉलिनोमियल लाइक bx plus c जदी मो पाखरे तय रहिला समथिंग ax क्यूब प्लस समथिंग x स्क्वायर प्लस समथिंग x तय जदी 3 डिग्री रहिला ऊपर मु नेमी मो फंक्शन a1x ax स्क्वायर प्लस bx plus c तीनटा वेरिएबल रहिबो काहे कि तीनटा वेरिएबल काहे रे मो पाखरे 3 डिग्री थिला मते ऊपर 2 डिग्री रे नबार ऑब्वियसली देखियो जदी हमें सॉल्व करके देखियो परे सिंपल लाइक जन तय qx ऑब्वियसली कटि जिवो काहे एलसीएम रे आसीबो आमे देखियो कि हमको जति वेरिएबल अछि सेति इक्वेशन इजीली मिल जिवो वी कैन जस्ट सॉल्व all the equations to get all the value of the variable constants तो हमें ए वाला दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन यहा को कोनथी पार्शियल फ्रैक्शन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट and this is the another very important thing it is called integration by parts what is integration by parts suppose you are given integration of u into v dx this is just equal to this you have to remember this thing you have to remember anyhow you have to remember u first suppose this is called the first function this is the second function u into integral of v dx u into integral of v minus du by dx into integral of v dx तार पुणी इंटीग्रेशन कौन कहली सिंपल जदि मो पाखरे अछि u into v फर्स्ट मते करियार अछि u बाहरे इंटीग्रल ऑफ v माइनस u रो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल ऑफ v एठु जहा आस्तिला तार dx करी कि तार इंटीग्रेशन this is called integration by parts example x cos x dx मु करिबी सपोज मोर एठी मु नउची फर्स्ट फंक्शन एटा सेकंड फंक्शन एटा तो मु कोन करिबी x into integration of cos x minus x रो डिफरेंशिएशन 1 into integration of cos x केते sin x तारो इंटीग्रेशन तो मोर कोन आसला x cos x रो इंटीग्रेशन आसला x sin x minus minus sin x रो कोन cos x x sin x plus cos x dx this is our thing तो आमे खाली गोटे जिंस देखियार अछि
सपोज हमको दीटा फंक्शन रे मल्टीप्लिकेशन दी आमे कहा को फर्स्ट फंक्शन नबा कहा को सेकंड फंक्शन नबा ता पई गोटे दिस इज नॉट ए रूल बट जहा कि इजीली देखा जाए द फर्स्ट फंक्शन आमे केमते नबा we decide the function is first function which comes first in the order from top to bottom काहे कि प्रथमे आमे फर्स्ट फंक्शन नहीं परबे इनवर्स फंक्शन गुडा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स गुडा then logarithmic then algebraic then trigonometric then exponential काहे कि आमो जे सेकंड फंक्शन अछि सेकंड फंक्शन टा को हमको इंटीग्रेट करते पड़छ हमें देखले इंटीग्रल v अछि इंटीग्रल इनवर्स जदि हमें नहीं नवा सेकंड फंक्शन इनवर्स रे इंटीग्रल कष्ट सबुटु कष्ट तो ताको हमें सेकंड नवा ताको हमें फर्स्ट नवा जदि इनवर्स नहीं ताने लोगारिथमिक माने इंटीग्रल कष्ट इंटीग्रेशन ऑफ ln x लोगारिथम रे इंटीग्रल बहुत कष्ट तो लोगारिथम भी हमें नवा तापरे धीरे धीरे तो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इजी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इजी थिंग्स टू डू इंटीग्रेशन जदि इंटीग्रेशन इजी होजी ताने ताको हमें नवा सेकंड फंक्शन जहार डिफरेंशिएशन इजी होजी ताको नवा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन इजी मैटर करेनी one rule if the integration is easy if the integration is easy you take it as the second function integration जदि easy अछि take it as the second function तो जहा रहिला तम पाखरे सेटा हे जिवो तमरो फर्स्ट फंक्शन तो एई भया हमें जनरली करता नेक्स्ट आ गोटे जिंस अछि कोन सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट दिस इज नथिंग तमे आपको डायरेक्ट एमती मन रख परियो और सपोज you have done some u v dx you have done one thing then some आउथरे जते करिया पनी आउथरे भी हमें बाय पार्ट्स लगाई परिया ता आउथरे बाय पार्ट्स लागिबा आउथरे बाय पार्ट्स लागिबा एमिति इजीली लागि परियो सेमिति किछ असर नै दिस इज अ फॉर्मूला मन रखिया दरकार नै इफ यू वांट टू यू कैन रिमेंबर बट दरकार नै यू कैन डू जस्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एबे आउ जत्ति की भी नेक्स्ट जत्ति की भी स्लाइड अछि these are all special types some types of integration ए सबु केमिति सॉल्व हेची ए सबु क्वेश्चन सॉल्व हेची केन मेथड रे हमें जहा जहा देखिले सब्स्टिट्यूशन हेची कि ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन हेची कि पार्शियल फ्रैक्शन हेची कि बाय पार्ट्स हेची ए चारटा मेथड रे सबु गुडा सॉल्व हेची बट एग्जाम रे कोन सब्स्टिट्यूट करियार अछि ताको हमको कोन भाबिया पई पड़िबो किंतु न भाबी कि हमें जदी किछटा मन रखि परिया त हमें डायरेक्ट कर परिया जेमति कि these are some special integrals based on integration by parts आपको मन रखते तो रखिया पई पड़िबो you can just remember this I am not going to discuss all of this then integration of some irrational function जहा भी रहला कि एई भया जदी किछि फंक्शन छी f of x, ये तो कहा को कौन सब्स्टिट्यूट करिया अछि हमको सब्स्टिट्यूट करिया अछि px plus q जो भीतर रहला ताको t to the power n सब्स्टिट्यूट करिया अछि तो एई भया कोन केडी सब्स्टिट्यूट करिया अछि एई भया जदी फॉर्म रे इंटीग्रेशन रहला 1 divided by l root m dx तो एटार कोन कोन सब्स्टिट्यूट करिया अछि सब टेबल देछि तो I will just means go through the slides you can just take the screenshots and keep it to remember this is one thing it is irrational function part eta hala am pakhare agote irrational type ର function ଅଛି जदी lm both are linear both is quadratic linear quadratic एई भया आरो गोटे एग्जांपल भी देखिबा हमें केमती होची then एई टाइप रो जदी किछि फंक्शन रे इंटीग्रल ऑफ ए टाइप then कंडीशन अछि कि r या हले या करिवा r एमती हले आ ए भया हने एटा गोटे कंडीशन रहला then these sub types integral these are called reduction formulas what are reduction formulas we don't solve the integration आमे कोन करू we don't solve आमे कोन करू ना आमे जस्ट ताकू गोटे छोटा फॉर्म रे एक्सप्रेस करताऊ in कोन जनरली गोटे पावर n रो गोटे फंक्शन थिबा हम इंटीग्रेशन हला some function of n like sin to the power n dx तो ताकू मु कोन ना जस्ट डिवाइड करिकी बाय पार्ट्स करिकी मु गोटे एमिति फॉर्म को नै आसली जे in is equal to this in को मु रिप्रेजेंट कर देली in minus 2 टर्म्स
in को मु रिप्रेजेंट कर देली in माइनस 2 टर्म्स तो मो पाखरे रही गला जे जदी sin टू द पावर n dx इज in then in is equal to something plus n minus 1 by n into in minus 2 तो मते कौन कैलकुलेट करे अछि मते खाली कैलकुलेट करे अछि फॉर n इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 2 ए दिटा कैलकुलेट कर देले आउ सब नंबर रो मु रिडक्शन फार्मूला लगे काढी पारि so these are called reduction formulas similarly sin to the power m cos to the power n रो अछि you can remember this एमिति बहुत फंक्शन रिडक्शन फार्मूलास you can derive these are called reduction formulas तापरे integration of time trigonometric एठी कोन करियार अछि either you can substitute or you can just do some trigonometric properties trigonometric function substitution किछि भी करि परिबा एठी so these are forms you can just remember these things कि m positive थिले कोन हबो n negative थिले कोन हबो large positive large negative थिले कोन हबो just remember एई टाइप रो इंटीग्रेशन थिले सेम टाइप रो कोन कहितली न्यूमरेटर को हमें रिप्लेस करिवा सम कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर plus some constant into differentiation of denominator same type रो simple constant into denominator plus constant into differentiation of denominator differentiation गोटे आसले कोन ताकू मु f ताकू t नै गले ता ऊपरे मते ता डेरिवेटिव मिल जिवो तो डेरिवेटिव ऊपरे नेले कटि जिवो so these type of things are there also tan sec रो जदी रहिला तो ताकू भी कोन कर परिबा हमें जानचे जे जदी हमें tan x को t नबा तो sec स्क्वायर x dx हे जिवो dt यदि मु tan x को t नेबी ताहले sec स्क्वायर x ds हे जिवो dt तो सेही भाया हम सब्स्टिट्यूट कर परिबी sec स्क्वायर x को मु 1 plus tan स्क्वायर x लिखि सब्स्टिट्यूट कर परिबी यदि sin x cos x रो किछि टर्म रहिला ताहले मध्ये मु बहुत किछि लिखि कि ताको सब्स्टिट्यूट करि परिबी and this is another type integral of type this एटारे हमें एया सब्स्टिट्यूट करथाउ डायरेक्ट आपको t सब्स्टिट्यूट करता है f of x plus minus x square plus a square तो डायरेक्ट आपको हमें तो सब्स्टिट्यूट करिया तो एई भाया हमती सॉल्व तो एती जो हमें देखिले एगुडा यू कैन जस्ट रिवाइज ट्राई टू यूज इट इन द क्वेश्चंस यू सॉल्व हमें सब कांसेप्ट रो क्वेश्चन देख परिबेनी हमें किछटा बाय पार्ट्स देखिबा हमें किछटा पार्शियल फ्रैक्शन देखिबा हमें सब किछि किछि देखिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो किछटा मिक्स्ड कांसेप्ट रो देखिबा बट यू जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द थिंग्स फर्स्ट क्वेश्चन हम पाखरे कोन अछि क्वेश्चन अछि fx is equal to integration of dx divided by 3 plus x square into root of 4 minus 3x square जेठी mod of x काई एटा कम देला ना रूट भीतर नेगेटिव मिलतो देन किछटा इंफॉर्मेशन हमको दीछि जे f of 0 या f of 1 या थिना अल्फाबेट इंफॉर्मेशन काई दीछि ना हमें इंटीग्रेशन करला परे हमको गोटे कांस्टेंट आसी कांस्टेंट एलिमिनेट करिया पय हमको इंफॉर्मेशन गोटा देछि सिंपल तो दिस इज ए फॉर्म क्वाड्रेटिक अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक तो ए फॉर्म टा जदी जहा को एग्जाम रे मन थिबा हमें कोन देखिबा l root m if l and m are both quadratic expressions then we will substitute x is equal to 1 by t हमें कोन सब्स्टिट्यूट करिया x equal to 1 by t यदि मु x equal to 1 by t सब्स्टिट्यूट करिबी then I will substitute x equal to 1 by t then the thing कौन होइयो आपको मैं लिखिबी dx is equal to minus 1 divided by t square dt simple तो मो पाखरे फंक्शन कौन अछि 3 plus x square तो आपको मैं 1 by t रिप्लेस करले यू कैन सी एटा कन्वर्ट हे जिवो एटा कन्वर्ट हे जिवो एटारे तापरे एटा कन्वर्ट होला परे हम आउ कोन देखिबा ना तापरे ऊपर गोटे t आसी जिवो हम पाखरे ऊपर गोटे t आसी जिवो एक्स्ट्रा ऊपर गोटे t आसला परे जस्ट पुट 4t square minus 3 is equal to z square एमाने पुट करचंती और you can just do what you can do so many things you can do t square is equal to means actually जते ए टाइप रो टर्म आसी जाय then you have to तम पाखरे ऊपर t dt अछि ना
आमो कौन देखा ऊपर कौन अच्छी टी dt अच्छी आम पाखरे ऊपर जतबे ऊपर टी dt अच्छी जदि ऊपर टी dt अच्छी आम पाखरे तो आमे कौन करवा ना जस्ट कौन आसीबी गोटे को आइदर आकू और आकू जेटा हने गोटे जेड स्क्वायर कहीं नवा जे जेड स्क्वायर नेले हमको आगु को फायदा अछि कौन फायदा अछि हमें देखि तो मो आकू नेमी जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर रखले मोर ऊपर हे जीवो जेड डी जेड बट आकू जदि मैं जेड स्क्वायर नेबी तो लाभ कौन हबो ना एई टर्मटा हे जीवो जेड आउ एई टर्मटा कौन हे जीवो सम फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इन जेड ऊपर मोर गोटे एक्स्ट्रा थिबो जेड तो मोर कटि जीवो मु कौन कहली सिंपल आकू जेड स्क्वायर नेले जदि मु 3t स्क्वायर प्लस 4 को जेड स्क्वायर नउची मो क्वेश्चन सॉल्व कला बेले आगु को बहुत कष्ट हो कहीं ऊपर भी गोटे रहिबो टी कि आ तो जे तो अंडर रूट भितर रहिले जे असुविधा तो सिंपल जिंस कोन करे एईटा मो जदि देखिबी एई भया ऊपर टी अछि तळे टी स्क्वायर अछि फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज remove the square root. You just have to remove the square root. Square root remove कर देले मो आगु को सिंपली सॉल्व कर पारि तो स्क्वायर रूट रिमूव करिया पाए मो 40 स्क्वायर माइनस 3 को नै नेबी z स्क्वायर 40 स्क्वायर माइनस 3 को z स्क्वायर नेले कोन हबो तो एटा हे जीवो z 3t स्क्वायर प्लस 4 को मो जदी लिखिबे सेटा एमिति किछ उटा आसीबो तो मु देखिबी जे az आ az कटि जीवो कटिगला परे मो पाखर रहइबो dz by some quadratic thing dz by some quadratic thing we direct like this 3z square plus 25 3z square plus 25 टा हम हमते लिख परबी some z square plus k square फॉर्म रे मोर इंटीग्रेशन कन्वर्ट हे गला dz divided by z square plus k square फॉर्म रे तो एटा कोन एटा हैला 1 by a tan inverse x by a sorry 1 by a के उठा आसी बटी 1 by k tan inverse x by k माने z by k दिस इज स्टैंडर्ड हमें स्टैंडर्ड देखिले स्टैंडर्ड रे तो एटा हला हमर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन टू कन्वर्ट है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन टू कन्वर्ट हला पर मु पाई जेबी जे दिस इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 3 t को मु 1 by x पुट करके आई कैन जस्ट put 0 f of 0 0 and do so that thing you can do you just have to see that आमे जो देखिथिले जे l root m थिले डिनोमिनेटर रे दीटा को क्वाड्रेट थिले x को पुट करे अछि 1 by t दिस इज आवर फर्स्ट कांसेप्ट सेकंड कांसेप्ट कोन रहला जे एई भया जदी अछि हम पाखरे तो अंडर रूट भितरे जे टर्म टा को अछि ताको हमें पुट करिया z स्क्वायर ले अंडर रूट कटि जु z स्क्वायर जहा भी t स्क्वायर जहा भी बोले अंडर रूट कटि जु तो एई टाइप रे हमें सब्स्टिट्यूशन र पावर एमिति सब्स्टिट्यूशन द्वारा हमें इंटीग्रेशन को एमिति सॉल्व करते नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हमें देखिए ix is equal to sec square x minus 2022 2022 कहला ए 2022 जे इवन क्वेश्चन ए वर्ष 2024 देखि क्वेश्चन बचा करे divided by sin to the power 2022 xt I of pi by 4 equal to this then 50 से I of pi by 3 को तो हमको सिंपल I of x कैलकुलेट करना है केमिति कैलकुलेट करबा तो फर्स्ट देखिला परे फर्स्ट आइडिया इज ए दिटा को अलगा कर दबा गोटे रहिबो sec square x dx divided by sin to the power 2022 आ गोटे रहिबो जेटा दिस थिंग डिवाइड करला परे आमे देखिबा जे sec square x बेसिस किछि बाट नाही हम पाखरे करिया पाई मींस सब्स्टिट्यूशन करले भी किछि लाभ नाही काई ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ा पावर अछि नाउ वी विल डू बाय पार्ट्स रे कोन करिवा आमे देखिबा जे sec square x रे इंटीग्रेशन सहज
कौन कहली सेक्स स्क्वायर एक्स रो इंटीग्रेशन सहज काहे सेक्स स्क्वायर एक्स रो इंटीग्रेशन कौन सेक्स स्क्वायर एक्स रो इंटीग्रेशन हला तो मो सेक्स स्क्वायर एक्स को नहीं जीबी सेकंड फंक्शन आ 1 डिवाइडेड बाय sin टू द पावर 2022x आपको मो नहीं जीबी फर्स्ट फंक्शन विल डू द सेम कौन करिवा हमें ना ताको फर्स्ट अलग अलग कर दो अलग अलग हे गला देन वी विल टेक सेक्स स्क्वायर एक्स एज द फर्स्ट फंक्शन तो मो पाखर कौन हला u इंटीग्रल ऑफ v सॉरी सेक्स स्क्वायर एक्स एज द सेकंड फंक्शन काई तारे इंटीग्रेशन सहज एटा फर्स्ट फंक्शन तो मु पाइबी u माने एटा इनटू इंटीग्रल ऑफ vx इंटीग्रल ऑफ vx dx माने इंटीग्रल ऑफ v कौन सेक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन tan x माइनस माइनस 1 by sin to the power 2022 रो u डैश माने r डिफरेंशिएशन कौन हो x sin x को x टाइप रो शिफ्ट r डिफरेंशिएशन आसीबा एटा इनटू cos x तापरे एठी tan x रहला तो मते कैलकुलेट कर अछि r इंटीग्रेशन बट आमे एबे जदी आपको सॉल्व कले लिखबा जे cos x tan x कौन cos x tan x is sin x तो गोटे एठी 2023 डा 22 हे जीवो गोटे sin x कटियाले आ एठी माइनस माइनस प्लस हे जीवो प्लस हे गला पर मु देखिबी जे एटा हला तो 2022 डिवाइडेड बाय sin टू द पावर 2022 x dx प्लस रे सिमिलरली मो पाखरे अछि माइनस रे 2022 डिवाइडेड बाय sin टू द पावर 2022 मो पाखरे प्लस रो रहिला 2022 डिवाइडेड बाय sin टू द पावर 2022 मो पाखरे माइनस रो भी सेम जिंस रहला तो ए दिडा जिंस कटि जीवो तो मु कोन पाइबी ix is equal to just tan x divided by sin to the power 2022x plus c this is a very simple integration एबे हमें कोन करियो ना जस्ट हमको दिया है i of pi by 4 is equal to this तो सही हिसाब रे हमें कैलकुलेट कर परिबा c रो वैल्यू कैलकुलेट करिकि we can just get to the options तो एठी हमें कोन सिखिले जे बाय पार्ट्स यूज कला पर बाय पार्ट्स यूज कला पर जे गोटे सपोज हमको गोटे इंटीग्रेशन देछि हमें ताको दुईटा पार्ट रे डिवाइड करले किछि प्लस किबा माइनस करिकि बाय पार्ट्स कला पर गोटे इंटीग्रेशन जे हमको मिले हम पाखरे आ गोटे इंटीग्रेशन जे थिबो आगरो से दिटा कटि जाय पारे माने से दिटा आपस रे नेगेटिव हेतिबो नेगेटिव हेतले हमको जो सिंपल टर्म दैट मिलता सेटा हे जिवो हम आंसर तो एई भया भी क्वेश्चन एग्जाम रे आसी पारे नेक्स्ट हमें देखिबा पचला कोन इंटीग्रेशन ऑफ 2e to the power x plus 3e to the power minus x divided by 4e to the power x plus 7e to the power x कौन करिवा सिंपल आइडिया को जस्ट राइट द न्यूमरेटर is equal to lambda into the denominator lambda into the denominator plus beta into तार डेरिवेटिव एमिति कले कोन हबो हिंट केमते मिलबो क्वेश्चन रू ना इंटीग्रेशन कला पर गोटा आछि खाली x आ गोटा आछि लॉगरिथम ऑफ तो जिनसटा डिनोमिनेटर तो x केमते आसीबो जदी एठी खाली कांस्टेंट टर्म थिबो कांस्टेंट केमते आसीबो ना ऊपर आईटा इनटू कांस्टेंट किछुटे थिबो ठीक अछि लॉगरिथम ऑफ एया केमते आसीबो ना जदी ऊपर आर डिफरेंशिएशन ता थिबो जदी ऊपर आर डिफरेंशिएशन थिबो तो मु जदी आकु t नै नेमी तो ऊपर जते मोस्ट dt मिल जिवो तो dt बाय t रो इंटीग्रेशन है लॉगरिथम तो लॉगरिथमिक ऑफ एया आसीबो एई भले आईडिया नै तो यो क्वेश्चन तो देखिबा आ गोटे प्लस सम कांस्टेंट लैम्बडा कांस्टेंट भी हमें रखी पारिया बट कांस्टेंट इज नॉट नीडेड काहे की दरकार नै ना हम क्वेश्चन रे हमको जणा पड़ी जाउची कि या तो कांस्टेंट नवा दरकार नै काई ऊपर कांस्टेंट टर्म नै ऊपर कांस्टेंट टर्म नै तो कांस्टेंट
आसीबन सिंपल। तो हम पाखरे एया रहला जस्ट दिस इक्वेशन वी विल सॉल्व फॉर ए एंड बी ए आउ बी ପାଇଁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଆମେ a ଆଉ b ପାଇ ଯିବା ତ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ କଣ ରହିବ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ 23/28 dx 23/28 dx ଟା ଜଷ୍ଟ dx ଏଟାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କେମିତି କରିବା ଆକୁ ନେଇ ନେବା t ତ ମୋର ଜଷ୍ଟ ଆସିଯିବ dt/t ଉପରେ ଯୋଉ ରହିଲା ଆର ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ତ ln ଅଫ ଯୋଉ ଡିନୋମିନେଟର ଟା ରହିଲା ସେଇଟା ଆସିବ ତ ଏଠି ମୁଁ ପାଇବି 1/14 ରହିଲା ପରେ v ହେଇଯିବ 1/2 ଆଉ u ହେଇଯିବ 13 ତ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ବି ଏମିତି ସଲ୍ଭ ନେକ୍ସଟ important question important ଆଗରୁ ବି ମୁଁ କହିଛି sin 2x ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ sin 2x ଅଛି ଆଉ କିଛିଟା constant ଅଛି we can just write 1 minus sin x or 1 plus sin x 1 plus sin x 2x को मैं लिख पारिबी sin x plus cos x रो होल स्क्वायर और 1 minus sin 2x को लिख पारिबी sin x minus cos x रो होल स्क्वायर एई जिंसटाको आमे एठी यूज करी काहे ना हमको ऊपर देखा होची cos x minus sin x अछि dx आगरे एटा कहारो डेरिवेटिव एटा हला sin x plus cos x रो डेरिवेटिव तो तय जो फंक्शन टा देइची अंडर रूट भितरे मु ताको जदी आ टर्म रे नहीं आसी परिबी ताने मोर काम होई जिवो तो मु आपको कोन लिख परिबी 9 minus 1 plus sin 2x ये लिख परिबी ना 1 plus sin 2x को मु लिख परिबी sin x plus cos x रो स्क्वायर ठीक अछि आकु मु जदी नै नेमी t sin x plus cos x को t नेले मु देखिबे जे ए जो पूरा टर्म टा अछि sin x रो डेरिवेटिव cos x रो माइनस cos x minus sin x dx होबो dt तो मो पाखरे हे जिवो dt divided by under root of 9 minus t dt divided by under root of a square minus x square constant integration ए टाइप रा आस जिवो दिस इज स्टैंडर्ड sin x plus cos x को मो t पुट करबी तो एटा मो डायरेक्ट 9 a square dx divided by a square minus x square ये होची sin inverse x by t तो sin inverse t by 3 t कौन sin x plus cos x तो मु इजीली पाई जीबी जे एटा हला 3 एटा हला 1 1,3 हला मोर आंसर तो एक क्वेश्चन में हमें कौन सिखले ना ऊपर जदी sin x plus cos x की sin x minus cos x अछि आमे तळ फंक्शन टाकू ता टर्म रे लेखिया पे चेष्टा करिया ता टर्म रे जदी हम लेखि परिबा ताले हमें क्वेश्चन का सॉल्व कर परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन this is also e to the power x this is also important similar by parts thing केउ कांसेप्ट सेम कांसेप्ट यदि प्लस माइनस करके हमें दीटा टर्म में लिखि परिबा देन कटि जिवो कांसेप्ट ता होची सपोज मो पाखरे अछि some e to the power fx plus gx dx suppose mu e to the power x fx टाकू बाय पार्ट्स करिबी तो मु जस्ट करबी e to the power x इंटीग्रेशन सहज ताको सेकंड फंक्शन f e to the power x u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस u dash this जदि g is equal to f dash हेइथिबो
ताहाले मो पाखरे एठी बंचिबो कोन मो पाखरे बंची थिबो e टू द पावर x into g माने कोन f dash ए दिटा कटि जिवो तम आंसर जस्ट आस जिवो f e टू द पावर x तो एठी हम कोन देखिबा जे हम रिजल्ट कोन हला दिस इज आवर रिजल्ट यदि एया थिबो आर आंसर हला e टू द पावर x प्लस c तो आम पाखरे कोन अछि आम पाखरे अछि सेम e टू द पावर x into गोटे जिंस अछि तार इंटीग्रेशन टा कहछि e टू द पावर x f तो एई जिंसटा को मु कन्वर्ट करि परिबि कि सम f plus f dash को now you can do two things you can observe what you can do you can observe or solve differential equation what differential equation you can solve f plus f dash is equal to x square plus 1 divided by x plus 1 raw square. You can do either this in differential equation or you can do this. यदि मैं ऑब्जर्व करी मु देखिबि जे x स्क्वायर प्लस 1 को मु लिखि परिबि x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 करके लिख परिबि ताको सॉल्व करले मु एमिति पाई जिबि x माइनस 1 बाय x प्लस 1 प्लस 2 बाय x प्लस 1 रो होल स्क्वायर मको सॉल्व करले देखिबि जे x माइनस 1 बाय x प्लस 1 रो डेरिवेटिव होची 2 into x प्लस 1 रो तमरे आंसर आस जिवु दिस fx हमर है जिवु fx आसिबि you can calculate f dash x you can calculate f double dash x you can also calculate f triple dash x तो ए टाइप रो क्वेश्चन रे you have to use by parts this is a very important trick next this is the question what you have to do now irrational function केते गुडा जिंस थिला आकु टी पुट करो आकु टी पुट करो तो you have to observe something कौन ऑब्जर्व करिवार अछि ऑब्जर्व कौन ऑब्जर्व करिवा जे जदी जदी मु आकु एमिति लेखि परिबि एमिति केमिति if you see a simple thing एटा को मु लेखि परिबि ए टाइप रे this thing can be written as this thing आउथरे भला देखले मु आकु लेखि परिबि x plus 1 by x minus 2 to the power 3 by 4 into x minus 2 रो स्क्वायर आर डेरिवेटिव जदि मु देखिबी आर डेरिवेटिव रे डिनोमिनेटर रे कोन आसे f by g रो डेरिवेटिव रे डिनोमिनेटर रे g स्क्वायर आसे एठी भी अछि सेम जिंस x minus 2 रो स्क्वायर आ ऊपर कले एटा कांस्टेंट इनटू आर डेरिवेटिव माइनस एटा कांस्टेंट इनटू आर डेरिवेटिव तो ऊपर हमर आसीबो कांस्टेंट जिंस जेटा गेला -3 मु पाई गली जदि मु आकु t पुट करबी जदि मु आकु t पुट करबी मु पाई जेबी जे दिस इज इक्वल टू -3 x minus 2 रो होल स्क्वायर इनटू dt by dx तो मु जस्ट dx by एटा को लिखि परिबी -dt by 3 तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड क्वेश्चन t to the power n dt n या हेले तो दिस इज इजी क्वेश्चन बट this step is the most difficult step this step is a difficult step केमेति स्ट्राइक करिवो ना जदि एई भया लिनियर फंक्शन थाए तो आउ एटा मिसी की 2 होथिवो तो देयर इज अ केस कि आ भितर जेटा छोट थिबो कि बड़ थिबो ताकू जदि हमें पुट कर देबा गोटे सिंपल जिंस ताहाले आर स्क्वायर आसी कि एटा सॉल्व हे जिवो बहुत इजीली सॉल्व हे
तो यही भया हमें ए टाइप रो क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दिस इज एन एक्सरसाइज। Hence, successive biparts. Successive biparts. This is the hint. This is an exercise for you. First, try to solve the question. Then you see this is the answer. Now, we will do a big question. This is our big question. बड़ क्वेश्चन ना केमती आम पाखरे देची गोटे बहुत बड़ फंक्शन x square minus 1 plus tan inverse x square plus 1 by x divided by x fourth plus 3x square plus 1 plus into tan inverse x square आपको हमें सिंपल देखछे जे गोटे नेले एटा कटि जिवो गोटे नेले ए जिंसटा कटि जिवो तो जस्ट स्प्लिट इट दीटा पार्ट रे स्प्लिट करदो स्प्लिट करी कोन हबो गोटे हि जिवो हमें एया रखिबा x square divided by x fourth plus 1 tan inverse ए आ गोटे हमर पार्ट हि जिवो सिंपल ए 1 divided by x fourth plus 3x square plus 1 तो आमे फर्स्ट सॉल्व करबा एटा देन आमे सॉल्व करबा एटा दिस इज if this seems easy but this is a difficult one एटा हला डिफिकल्ट एटा हमको होबो इजी केमती आम i1 को जदी आमे देखिबा गोटे सिंपल जिंसो जे एटा जे आको आमे लिखि परिबा x plus 1 by x लिखि परिबा जदी मु ऊपर देखिबी मो पाखरे अछि x स्क्वायर माइनस 1 टिके ओडवा ओडवा लागुछि नै जदी मको एमिति लिखि देबी x स्क्वायर कॉमन नै लिखि 1 divided by 1 minus 1 divided by x square एटार डेरिवेटिव x स्क्वायर टाको मैं एडी डिवाइड कर देबी x स्क्वायर टे डिवाइड करले मु कोन पाइबी x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस 3 तो मु आकु केमति लिख परिबी आकु मु लिखि परिबी ना x प्लस 1 by x रो x plus 1 by x स्क्वायर प्लस 1 आकु मैं एमति लिख परिबी तो एई जो पूरा फंक्शन टा मो पाखरे जो पूरा एते बडो फंक्शन टा रहला ए पूरा फंक्शन टा मु लिखि परिबी सम f of function of x plus 1 by x रे लिख माने मो वेरिएबल टा x रु मु 1 by x शिफ्ट कर देबी सेही हिसाब रे मो सिंपल कोन करबी x plus 1 by x को जदी मु t पके देबी मो फंक्शन टा जस्ट सिंपल dt रे गोटे डिफरेंशियल माने इंटीग्रेशन हे जिवो मो सिंपल जदी पकेबी एबे x plus 1 by x को t पकेया पय चेष्टा करबी तो बहुत के जिंस मो पाखरे आसीबो बट एबे आ गोटे जिंस नेक्स्ट मो x plus 1 को t पके देबी x plus 1 को t पकेला परे मो पाखरे कोन आसीबो dt divided by t square plus 1 dt divided by t square plus 1 मो सॉल्यूशन देखुनी मो x plus 1 by x को t पके x plus 1 by x को t पकेला परे मु देखि जे dt divided by t square plus 1 into tan inverse t ठीक अछि तो एबे मोर काम होची इनवर्स हटेबार अछि इनवर्स केमिति हटेबा अछि tan इनवर्स x रो डेरिवेटिव कोन 1 by 1 plus x हे गला tan इनवर्स x को मु पके देबी p तो dt by t square plus 1 is simply dp तो मते में गला dp by p dp by p रो इंटीग्रेशन हबो ln of mod of p p कोन थला tan इनवर्स t t कोन थला x plus 1 by x मु फर्स्ट इंटीग्रल
देन हमको कैलकुलेट करना अछि I2 I2 कैलकुलेट कला बेले हमें सेम जिंस करबा हमको सिंपली ताको x जदि दिस इज अ फॉर्म जदि तय अछि फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल प्लस सम कांस्टेंट टर्म ताको हमें सिंपल दुईटा पार्ट रे करबा गोटे फंक्शन ऑफ x बाय x प्लस 1 पार्ट रे आ गोटे फंक्शन ऑफ x माइनस 1 बाय x पार्ट दुईटा पार्ट रे जदि मु डिवाइड कर पारिबी ताको तो मु सॉल्व करबी केमती करबी ऊपर अछि 1 1 को मु जस्ट 2 कर देबी बाहर 1 बाय 2 हे 2 को मु लिख पारिबी x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 फॉर्म एटा मु लिखि सारले मु मो पाखरे दीटा जिंस होई गला गोटे हे जीवो मो पाखरे गोटे हे जीवो x स्क्वायर प्लस 1 को मु गोटे इंटीग्रेशन हे जीवो एटा आ गोटे इंटीग्रेशन हे जीवो एया जेटारे ऊपर 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर अछि सेटारे मु नेमी एटा को t आ जेटारे 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर अछि सेटारे मु नेमी x प्लस 1 बाय x इक्वल t जेंगे हमें सॉल्व करथले तो ए दिटा इंटीग्रेशन सॉल्व करले easily I can find that I2 is equal to some tan inverse formula easily achieve तो I1 plus I2 मु पाई जेबी I1 plus I2 पाई गेले मु देखिबी जे मो क्वेश्चन जेमति पचारची that I can solve this type of thing. So these type of things we do generally in integration. Integration just you have to remember these so many things. So integration you have to do this exercise question also by yourself and just see the last question also once again. This is also a good question. Thanks. Sir finished sir.